A boy standing on a long railroad car through a ball straight upward. The car is moving on a horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square, and the projection velocity in the vertical deflection is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? एक लॉन्ग रेल कार है, सपोज यहाँ कोई एक बॉय है, वो एक बॉल को थ्रो करता है इन अपवर्ड, ये बॉल थ्रो करता है 9.8 मीटर पर सेकेंड से, 9.8 मीटर पर सेकेंड, और कार की जो एक्सेलरेशन है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सपोज एट द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग द बॉल कार की स्पीड इज u मीटर पर सेकेंड. जो बॉल की स्पीड होगी, बॉल विल गेन टू स्पीड्स, वर्टिकली 9.8 मीटर पर सेकेंड एंड हॉरिजॉन्टली ux इज इक्वल टू u. सपोज बॉल जो इस तरह से जाती है एंड वापस इस पर रेल पर गिरती, तो टाइम टेकन टू फॉर इट्स जर्नी फ्रॉम रेल टू कमिंग बैक टू रेल, या टाइम ऑफ फ्लाइट, t is equal to 2u by g, 2 into 9.8 upon 9.8 2 second. Horizontal distance in direction of motion of rail of car traveled by the ball, that is ux into t is equal to u into t is equal to u into 2u meter. Horizontal distance, suppose this is x1, distance moved by car, that will be x2 ut plus half at square, u into 2 plus half a is 1 into t square, 2u plus 2 meter. तो ये जो कार मूव कर जाएगी वो 2u प्लस 2 मीटर एंड बॉय ये बॉल मूव करेगी 2u, यानी कि बॉय मूव कर जाएगा 2u प्लस 2 मीटर एंड बॉल वी मूव हॉरिजॉन्टली 2u. तो डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी the distance behind which the ball will fall
डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2u प्लस 2 माइनस 2u इज इक्वल टू 2 मीटर। तो 2 मीटर बिहाइंड जो है बॉल गिरेगी।